वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर द जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर सिलेक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 is which one is the longest river in Jammu and Kashmir? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू with which city? Here answer is option A, that is Sialkot. Question number 3 is on which hill the Vaishno Devi Mandir is located? Here answer is Trikuta Hills. Option C is the right answer. Next question is total number of national park in Jammu and Kashmir. Here answer is option C, that is 5. Next question is which city has the most population in Jammu and Kashmir? Here answer is option C, that is Srinagar. Next question is the major barrier to international migration today is. The major barrier to international migration today is. Here the right answer is option C, that is immigration controls. Next question is money sent back to their families by migrants is called. Here answer is remittances. Remittances is the right answer. Next question is the female unemployment rate as a percentage of the male unemployment rate is the. क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। द फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज अ परसेंटेज ऑफ द मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट जेंडर रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशो। क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 0 to 6 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हेयर द आंसर इज the annual number of female deaths per 100,000 live births due to pregnancy. Next question is what is the correct descending order on the basis of the number of sex ratio in the states. क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, जैसे अगर घर में फैमिली मेम्बर्स हैं तो पहले दादाजी, फिर उसके बाद में दादी जी, फिर उसके बाद में पापा, फिर उससे मम्मा, ऐसे करके इनके पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्स रेशो इन द स्टेट्स। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ सबसे पहले आएगा केरला, उसके बाद में तमिलनाडु,
उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में छत्तीसगढ़। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू with reference to the total fertility rate, that is TFR. Which of the following statement is not true with reference to the total fertility rate TFR? Here A is the number of children born in the entire reproduction period of a woman is called the total fertility rate of that female. B is Bihar has the highest total fertility rate of 3.3 among Indian states. C is the total fertility rate TFR of West Bengal, Tamil Nadu and Delhi is equal. D is in India, Buddhism has the lowest total fertility rate. This is true. Option D is the right answer. In India, Buddhism has the lowest total fertility rate. Question number 13 is when marginal utility diminishes total utility. Here when marginal utility diminishes total utility, here the right answer is option D, that is increases at a diminishing rate. Next question is the elasticity of demand for goods used for alternative purpose is. The elasticity of demand for goods used for alternative purposes is. Here the right answer is option D, that is none of these. इनमें से कोई भी नहीं, ना तो इन इलास्टिक है, ना ही इलास्टिक है और ना ही इन्फिनिट है। एक बार फिर देखते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव पर्पज इज। ऑप्शंस हैं इन इलास्टिक, इलास्टिक, इन्फिनिट और नन ऑफ दीज। सो गाइज हियर आंसर इज नन ऑफ दीज. दिस इज द राइट आंसर. Question number 15 is in case of relatively more elastic demand curve is. In case of relatively more elastic demand curve is. Very important question बनता है friends. In case of relatively more elastic demand curve is. Here the right answer is option D, that is flatter. This is the right answer. Next question is an indifference curve shows combinations of two goods that. An indifference curve shows combinations of two goods that. Here the options are A, consumer could buy with their given income. B is would provide the consumer with the same level of satisfaction. C is could be available to the consumer in a given time period. And D is could provide the consumer with similar levels of satisfaction. So here answer is question number 16 का आंसर है ऑप्शन B, would provide the consumer with the same level of satisfaction. क्वेश्चन था an indifference curve shows combinations of two goods that would provide the consumer with the same level of satisfaction. Next question is which of the following statement is not true of indifference curves. क्वेश्चन बनता है important. Here A is they exhibit higher levels of utility as you move from the origin. B is they are downward sloping. C is they could intersect और D है they are convex to the origin. So friends यहाँ पे जो सही है सही नहीं है क्योंकि ना ट्रू बोला है, वो कौन सा है 17th का ऑप्शन डी, दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये सही नहीं है.
Next question is, an indifference curve between two commodities where one is bad and the other is good would, question बनता है very important. An indifference curve between two commodities where one is bad and the other is good. An indifference curve between two commodities where one is a bad and the other is a good would, here answer is option A, be upward sloping. क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. सो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना मत भूलना फ्रेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, एंड इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू कमोडिटीज वेयर वन इज बैड एंड द अदर इज गुड वुड, आंसर इज बी अपवर्ड स्लोपिंग. ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ अ डैश. व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द speed of a. What are the units used to count the speed of a dash? Here answer is question number 19 and the answer is option B, that is dpi. What are the units used to count the speed of a dpi? Next question is question number 20. Which of these is a pointing and drop device? A है स्कैनर, B है माउस, C है प्रिंटर और D है यहाँ पे CD रोम. Which of these is a pointing and drop device? क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट. Here the answer is option B, that is mouse. Next question is, question number 21. In which view headers and footers are visible? क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. हेयर आंसर इज प्रिंट लेआउट व्यू. हेडर और फुटर जो है वो कहाँ पे दिखते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की. टू चेंज line height to 1.5 we use shortcut key. Question number 22, answer is control plus 5. This is the right answer. Next question is question number 23. A number of letters that appears little above the normal text is called. A number of letters that appears little above the normal text is called. Here answer is question number 23 superscript. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, superscript. Next question is, which one can be used as watermark in a Word document? Which one can be used as watermark in a Word document? Here A is text, B is image, C is both A and B, D is none. Question number 24 and the right answer is option C, that is both A and B. So text and image can be used as watermark in a Word document. Answer is both A and B. Next question is, vibration of particles in solids at fixed position is due to. क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट. वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड एट फिक्स्ड पोजिशन इज ड्यू टू. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स एट फिक्स्ड पोजिशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी.
Next question is regular arrangement of particles is found in. Here the right answer is solids. Regular arrangement of particles is found in solids. Regular arrangement of particles is found in solids. Friends, I am repeating these options 2 or 3 times for your better understanding. Next question is hydrogen is obtained by. Question बनता है important. Hydrogen is obtained by reaction of methane. Option A is the right answer. Hydrogen is obtained by reaction of methane. Next question is order of ammonia is. Order of ammonia is. Here the right answer is option D, strong and pungent. Order of ammonia is strong and pungent. So option D is the right answer. Question number 29 is plastic industry began in. Question number 29, plastic industry began in. Here answer is 1909. Next question is ammonia is made by mixing two gases. These gases are. Ammonia is made by mixing two gases. These gases are. Here answer is nitrogen and hydrogen. Option A is the right answer. Question number 31 is the Shalimar Bagh was built by. Question बनता है very important. The Shalimar Bagh was built by. Here the right answer is option D, that is जहांगीर. शालीमार बाग जो है वो किसने बनवाया था? जहांगीर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डिफाइंड एज द रेट विच equates the present value of cash in low with the cash outflow. Example NPV is 0. So क्या है यहाँ पे आंसर? डैश इज डिफाइंड. Here the right answer is IRR. IRR is defined. IRR is defined as the rate which equates the present value of cash in low with the cash outflow. Example NPV is 0. So IRR is the right answer, option A. Next question is question number 33. यहाँ पे है the explicit cost of capital is associated with. The explicit cost of capital is associated with. Here the right answer is option A, that is raising of funds. The explicit cost of capital is associated with raising of funds. Option A is the right answer. Question number 34 is the explicit cost of capital is associated with. Option जो है A is the right answer, that is raising of funds. Question number 33. Next question is question number 34. A project offering a profitability index greater than dash. A project offering a profitability index greater than dash must offer a NPV which is positive. Question बनता है very important. Here a project offering a profitability index greater than dash. Here right answer is यहाँ पे options है 1, 0, 2 और 5. So a project offering a profitability index greater than 1. यहाँ पे क्या आंसर है आपका? 1. A project offering a profitability index greater than 1 must offer a NPV which is positive. Next question is which of the following
evaluation technique is better in situation of capital rationing? Which of the following evaluation technique is better in situation of capital rationing? क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। हेयर आंसर इज, यहाँ पे ऑप्शन हैं PL इंडेक्स, NPV, बोथ A एंड B, नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स यहाँ आंसर है जो वो है आपका PL इंडेक्स। PL इंडेक्स evaluation technique is better in situation of capital rationing. So answer is आपका option A. Next question is, the total risk of company can be broken down into. The total risk of company can be broken down into A is business risk, B is financial risk, C is both, D is none. So here the right answer is both. The total risk of company can be broken down into both, यानी कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोजेक्ट हैड एन इक्विटी बीटा of 1.2 and debit beta of 0. This project is financed by combination of 30% debit and 70% equity. Then project beta is a. Here the right answer is option C, that is 0.84. Next question is question number 38. Dash is an expression of market sensitivity of investment or how volatile if it is compared with the normal volatility of market. क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। डैश इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मार्केट सेंसिटिविटी of investment or how volatile if it is compared with the normal volatility of market. So normal volatility of market. क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। हेयर द राइट आंसर इज डैश इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मार्केट। सो हेयर द राइट आंसर इज 38 का ऑप्शन ए, बीटा। बीटा इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। Next question is, which of the following approaches attempts to handle the problem of risk and uncertainty in a project? क्या है यहाँ पे दिया हुआ, कौन कौन सी अप्रोचें हैं? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, सी है डिसीजन ट्री और डी है ऑल ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव वाले जो है ऑप्शन जहाँ पे दिया हो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है ऑल ऑफ द एबव होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द salient features of deep discount bonds, that is DD V's, does not include. The salient features of deep discount bonds does not include. Here A is it carries a fixed rate of interest. B is DD V's are issued discount to face value bond. C is these are zero interest bonds. D is difference between sale price and original cost is investors profit. So friends यहाँ पे the silent features of deep discount bonds does not include, क्या नहीं include होता उसमें? Here the right answer is option A, it carries a fixed rate of interest. ये जो है इसमें include नहीं होता, it carries a fixed rate of interest. The silent features of deep discount bonds DDVs does not include क्या? Fixed rate of interest. Next question is, financial leverage can be measured in. Question बनता है very important. Financial leverage can be measured in. Here A is stock term, B is flow term, C is
both A and B, and D is none of the above. Here the right answer is option C, that is both A and B. Financial leverage can be measured in both A and B, that is stock term and flow term. Here the right answer is both A and B. Next question is question number 42. Under dash method, price of security is weighted average at which the majority of investors are willing to buy. Under dash method, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज वेटेड, कौन सी जो मेथड है? हेयर ऑप्शंस आर बुक बिल्डिंग, पेन बिल्डिंग, बिल्डिंग और वुड बिल्डिंग. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अंडर बुक बिल्डिंग मेथड, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज वेटेड एवरेज एट विच द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू बाय. So book building is the right answer. Next question is question number 43. In dash rate, a certain percentage of interest will be of variable nature over the above the fixed rate of interest. So in dash rate, a certain percentage of interest will be of variable nature over and above the fixed rate of interest. Here right answer is in dash rate. कौन से रेट पे? एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 43. उसके बाद में थर्ड क्या है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट और मिक्स्ड इंटरेस्ट. हेयर द राइट आंसर इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट. दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पे पूछा क्या गया था? इन डैश रेट ए सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑफ वेरिएबल नेचर ओवर एंड अबव द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. हेयर आंसर इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 44 इज weighted average cost of capital WACC is. 44 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी. कॉस्ट ऑफ डेबिट इनटू परसेंटेज इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू परसेंटेज डेबिट. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. weighted average cost of capital is cost of debit into percentage equity plus cost of equity into percentage debit. Next question is which of the following theory advocates that cost of capital is dependent on capital structure? Which of the following theory advocates that cost of capital is dependent on capital structure? Here the right answer is option B, that is net income approach. Net income approach theory advocates that cost of capital is dependent on capital structure. Option B is the right answer. Net income approach. Next question is question 46. Given following data, calculate cost of capital under net income NI approach. Given following data, calculate cost of capital under net income NI approach. First is EBIT is rupees 20 lakh. Second is 400,000 shares of rupees 10 each and market capitalization is 16%. Third is 25,000 14% debentures of rupees 150 each. सो हेयर क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हेयर द राइट आंसर इज, यहाँ पे क्या है राइट आंसर आपका? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी. क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 15.42%.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not correct under NOI approach? फर्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बी है इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ डेबिट कैपिटल, इंक्रीज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बाय स्टॉक होल्डर्स। सी है बेनिफिट ऑफ यूजिंग चीपर डेबिट फंड्स इज ऑफसेट बाय द लॉस अराइजिंग out of the increase in cost of equity. D है none of the above. So friends, here question number 47 का जो right answer बनता है that is none of the above. This is the right answer. Question number 48 is the duration of operating cycle is computed by. The duration of operating cycle is computed by option यहाँ पे है days, weeks, months or years. The duration of operating cycle is computed by answer है years. The duration of operating cycle is computed by years. Option D is the right answer. Friends, question बनता है very important. Next question is question number 49. Which among these is not an operating expense? Which among these is not an operating expense? Here the right answer is option C, that is purchase of raw material, tax and dividend. यहाँ पे पूछा गया है कि which among these is not an operating expense, so tax and dividend is not an operating expense. Tax and dividend is not an operating expense. Question number 50 is depreciation and return of intangible assets are included in. Depreciation and return of intangible assets are included in. Here the right answer is non-cash expenses. Non-cash expenses is the right answer. Depreciation and return of intangible assets are included in non-cash expenses. So friends, today we have completed 50 most expected questions for the JKSSB Panchayat Accounts Assistant exam. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Thanks for watching this video friends. Prepare well, perform well. Friends, हमारे पास समय कम है, तो समय को देखते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा होता है कई बार क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट में, तो मेरा भी दिल करता है कि हम जो है इस सेट को स्किप कर दें, बट फ्रेंड्स स्किप इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर हम स्किप करेंगे तो इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रॉब्लम, बिकॉज आवर एम इज़ टू राइट द टिक द राइट ऑप्शन ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम। सो ये तभी संभव हो पाएगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर रिवाइजिंग द क्वेश्चंस 2 or 3 टाइम्स। सो फ्रेंड्स, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ प्रॉपरली, देयर आर सम पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग देम सेल्व्स प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू कम्पीट विद देम। अगर हमने उनके साथ कम्पीट करना है तो हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।